Hello guys, welcome back. 3rd of July. Okay, the biggest problem is our dependence on imported energy, which is only 4% of our GDP. Okay. Neelkant Mishra, co-head of Asia Pacific Strategy, India equity strategist with Credit Suisse and part-time member of the PM's Economic Advisory Council and unpacks the inflation basket. This explained live session was moderated by Anil Sasi, National Business Editor. देख लेते हैं काम की बात लग रही है. Okay, about ongoing inflation. As economies have opened up, supply is responding, but demand had gone up well in advance. Correct. That created inflation exacerbated by what we call supply chain bullwhips. कि भाई जब सप्लाई चेन एकदम से ठप हो गई थी, डिमांड लेकिन उतनी ही की उतनी है, तो इस वजह से इन्फ्लेशन आया है. When there is a slight amount of shortage, everyone moves from just in time to just in case. ठीक है. Instead of having enough inventory, you start saying, I don't want to lose production, so let me order some more. Hoarding करने लगते हो. The apparent demand starts to move up much faster than real demand. सही बात है भाई. पार्ले जी के बिस्कुट ख़त्म हो गए थे, कोविड में बाहर जाने नहीं दिया, पुलिस वालों ने मारा कुटाई करी. अब भले ही लाने मुझे 4 दिन के ही हैं खाने के लिए, लेकिन अब की बार जब मैं दुकान खुलने पे जाऊंगा तो 8 ही लाऊंगा. पता चले अगली बार फिर बंद हो गई तो रियल डिमांड 4 की ही है, बट ये propped up demand basically. Everyone is building an inventory. In the US in particular, this became really bad because it did not have the manufacturing capacity to meet the additional demand. But it had triggered that demand by handing over cash to people through stimulus. Helicopter money भेज दिया उन्होंने. The demand went over to China, Japan, India. पैसे आ गए यार हाथ में, सामान है ही नहीं, सप्लाई है ही नहीं, पैसे खूब आ गए हाथों में. The demand went over to China, Japan, India, Bangladesh, and when the goods started hitting the US ports, they realized these didn't have the capacity. This triggered a wage price spiral in the US, which is the most dangerous form of inflation, where people start demanding wage hikes and prices go up. रियली ऑन ग्राउंड कुछ एक्स्ट्रा बन नहीं रहा है. पहले तो उनको पैसे वैसे ज़्यादा दे दिए, उससे इन्फ्लेट होकर की चीज़ें महंगी हो गई. अब ये और वेज हाइक्स मांग रहे हैं कि भाई हमारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो ये आगे से आगे स्पायरल बढ़ता ही जाएगा. In February 2022, when the Russia-Ukraine conflict started, the global oil supply went down, exacerbating inflation. ठीक है. Dense energy is critical for economic growth, and if there is a shortage of gas and oil, the global GDP has to shrink by that much. Now, for that to happen, demand has to fall. And for demand to fall, prices have to go up. I think this is a very serious problem. Fiscal and monetary interventions are being undertaken by most countries which can afford to subsidize oil prices. Everyone from Australia to the US and China is giving incentives. They have cut down excise duties so that the retail price of the oil doesn't change. But the suppliers benefiting from this are unwilling to invest in increasing capacity because they are unsure how long this will last. सही बात है सर. उनको डर लग रहा है कि फिर से ऐसा अगर कुछ होता है तो फिर हमारा ये जो इतना सारा एक्स्ट्रा ऑयल है पिछली बार की तरह इतना बुरी तरह प्लमेट कर जाएगी. यार पर्सनल इंटरेस्ट बड़े होते हैं यार, जनरल इंटरेस्ट्स. Then there is what I would call forced saving. That is a phenomena that we read. क्या कहते हैं इसको? Ricardian equivalence. If the global oil market was $2.5 trillion at $70 a barrel, it is now closer to $4 trillion. So $1.5 trillion is moving from consumers to suppliers. The consumers are buying less and the suppliers are saving the surplus. सही गल है. फालतू का महंगावड़ा लगा रखा है साहब. सेम ऑयल के ये $1.5 ट्रिलियन एक्स्ट्रा जा रहे हैं इनके पास में, सिर्फ इसलिए कि ये लोग जानबूझ करके लिमिट कर रहे हैं प्रोडक्शन को कि अभी तो डिमांड है, बाद में अगर नहीं रही तो. This is a forced saving which is very bad for growth and leads to stagflation.
I don't think this is going away in a hurry. On CPI inflation covering towards wholesale inflation, converging towards wholesale inflation. Okay. Whether rate hikes are the right solution is debatable. We tend to look at inflation on a year on year basis. We need to look at how inflation impulses have been coming through month on month changes, if they are below or above seasonal. The CPI inflation went up from 4.3% in September last year to 7.8% in April because of the seasonal moves in the index. The October November moves were almost 100% in vegetables as prices went up sharply, while there was correction in onion prices. Tomatoes and potatoes became costlier. The March April inflation was global because of higher prices of crude oil. Cereal inflation went up mostly because of global wheat and our free grain scheme. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana caused rice and wheat prices to fall. So there are several one-offs in that local component. When you raise rates, you are slowing the economy down to match demand and supply. That is debatable. भाई रेट्स हाइक करके आप जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको खींच लेना चाहते हैं ताकि लोग खाली अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही खरीदें चीज़ें। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है ये ड्रिवन है सप्लाई साइड से भी बहुत सारा। कहने का मतलब सिर्फ डिमांड साइड से नहीं, और सीज़न भी मैटर करता है कि क्या उगा है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं बीच में जिनको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता है। उन्हीं का काम है ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग वगैरह। On the variation in central bank interventions, the biggest problem for India is our significant dependence on imported energy, which is 4% of our GDP. So, if prices go up by 50 to 60%, you see a natural outflow of nearly 2% of the GDP. It's simplistic, but say everything remains the same and prices go up by 2.5%, it is necessary to raise rates to control that price. Oh, ये तो और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। Our challenge is the need to curtail demand, and our biggest problem is our balance of payments. We were running a reasonably comfortable balance of payment surplus of about $15 to 20 billion on an annual level. Achha ji. If your imported energy bill goes up by $90 billion and there are commensurate increases in coal, gas, fertilizer and edible oil, because all of them at some level are linked, because तेल से ही तो सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, your balance of payments is suddenly in a $70 billion deficit. समझ रहे हैं ना आप लोग? तेल के बढ़े हुए प्राइस के कारण हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं। उनको रोकने का तरीका एक ही है, और वो है कि डिमांड को कंट्रोल करें। Now you can keep paying for it by increasing capital flows, but you need to reduce your imports. Before the Russia-Ukraine war, my view was we would report a GDP growth of 3 to 4% in 523. That number has to be brought down because there's almost a 2.5% extra burden of energy cost. We need to frame monetary policy based on our needs, not follow the US Fed. अरे बात तो गहरी कही है इन्होंने। On the RBI's rule, there are multiple aspects here. In my view, the most reliable unemployment indicator is the Narega job demand. If 2 crore people are wanting to work at rupees 200 a day, that's an important indicator of the slack in the economy. ये देखा था हमने कुछ दिन पहले कि भाई ठीक है, नंबर ऑफ पीपल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर नरेगा बढ़ रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड सिग्नेचर, मतलब वो अच्छी बात नहीं है. दैट नंबर इज़ now only about 20 lakh higher than the average in April 2019, which I think is an important indicator of normalization, thankfully. But the question is, which tool do you use? There is a repo rate, the rate at which banks borrow from the Reserve Bank, and there is a reverse repo rate, so that banks can deposit surplus funds to the central bank. When there is significant overnight liquidity, too much money in the system, and banks are unable to lend it, they deposit funds with the central bank.
ये तो आपको पता है रेपो और रिवर्स रेपो क्या होती है, ठीक है। व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ सरप्लस, द इफेक्टिव रेट इज द रिवर्स रेपो रेट। सरप्लस ऐसा हो यानी कि दिस काइंड ऑफ सरप्लस यानी कि for the fortnight ending September 2021, the cost of absorption, the effective reverse repo rate was 3.37%, and in Feb it became 3.87% because the RBI started to absorb liquidity through what they call the VRRRR, variable rate reverse repo options. हाँ मतलब दूसरे दूसरे नाम दे करके हरकत वही कर रहे हो. The wage price spiral in the US is not visible here. Most vegetable prices are local, and till the time we see local wage rates go up significantly, there is a lesser need to tighten because of the risk of entrenched inflation expectations. This is something we need to watch. What is that? There's a lesser need to tighten because of the risk of entrenched inflation expectation. क्योंकि भाई हमारी सब्जियों की प्राइसेस तो लोकल ही हैं और सीजनली भी चेंज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि वहाँ पर ऐसा हो गया कि पहले तो प्राइसेस बढ़े और उसकी वजह से फिर ज़्यादा वेजेस मांगने लगे और फिर वो वेज प्राइस स्पाइरल हो गया वहाँ पे. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ कुछ कमोडिटीज़ की टेम्परेरीली इन्फ्लेशन बढ़ जाने की वजह से ये स्पाइरल में हम नहीं जाएंगे. I think the inflation expectations are more anchored to the CPI. The WPI is what companies see, and it's much more influenced by crude and commodities. If inflation expectations start getting entrenched, then we need to worry more. तो मतलब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नाम की जो चीज़ है ना, ये काफ़ी बड़ा खतरा है. ये स्टैगफ्लेशन में पहुंचाएगी आदमी को कि होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम तो यही मान के चल रहे हैं पास को देख कर कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. ऐसे में ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे. लोग बाग फालतू में सेव करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, तो ग्रो तो नहीं करेगी इस तरह से इकोनॉमी. On the signals from RBI, I think the off-cycle hike was to large extent influenced by the Fed's increase. हाँ यार ये गलत है कि मतलब आप उनकी पॉलिसीज़ देख करके अपनी पॉलिसीज़ बदल रहे हो, अगर जैसा कि ये भाई साहब कह रहे हैं. Because when we think about capital flows, we tend to think of it as portfolio investors, as foreign direct investment, venture capital, private equity, and external commercial borrowing. A very reasonable part of our dollar inflows is actually trade finance. What happens is that if the Fed hikes and you don't, and these are all very short term loans, it makes much more sense on a currency arbitrage basis because the US rates are always lower than ours. ठीक है. There is a risk of the rupee depreciating, which is why those rates are stabilizing at a certain gap now. If that gap widens, कौन सा गैप? एक तो हम यूएस रेट्स जो कि बहुत छोटे हैं, हमेशा कम ही हैं, और ये जो हमने उनको देख करके अपना रंग बदल लिया है, हाइक करिए रेट. किस लिए हाइक करिए? उनका ये जो अब उनके उनके छोटे से हाइक की वजह से यहाँ से सारा जो एफपीआई का पैसा है वो उठ करके बाहर जा रहा है. उस वजह से हमारे को और दूसरे कारणों से हमारे को इन्फ्लेशन झेलना पड़ रहा है, इसलिए हम बढ़ा रहे हैं. हमारा और उनका रेट का बीच में गैप है. तो हम जब ये बढ़ा रहे हैं तो गैप भी बढ़ रहा है. So there is a risk of the rupee depreciating, which is why those rates are stabilizing at a certain gap now. If that gap widens, it makes sense for the new borrower to repay the dollar debt and borrow in rupees. That increases the demand for dollars. If you raise rates, you get more dollar inflows, but that is not really true in India. Okay. If you see our capital inflows, most are related to growth. So for indirect investment, venture capital, private equity, portfolio investment in equities, we don't have rate linked flows. अच्छा जी, तो जो ये हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहा है, ये रेट हाइक से कंट्रोल करने योग्य चीज़ है नहीं. कहने का मतलब ये है.
In any case, there was some normalization that was necessary given that the economy is reviving. हाँ तो थोड़ी सी रेट बढ़ा करके कुछ गलत नहीं किया. So some rate hikes will happen and should happen. We need to check if the Fed keeps hiking on the very short term flows. If we are not careful, we could see a much sharper dollar outflow than we have seen so far, which can then pressure the currency. जितना समझ आया ठीक है. मेजर मुद्दे आपको पता है. फेड को देख करके अपनी रेट मत डिसाइड करो, अपने सरकमस्टांसेस कम्प्लीटली अलग है उनसे. ठीक है. और भाई रुपी के डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए भाई वही है, डिमांड तो अपने आप ही है. सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनको एड्रेस किया जाए सर, यही है.